if you remember, pendulum is like this. Pendulum goes like this and like this, right? It oscillates about the equilibrium position. So the period is 2 pi over omega, क्योंकि आपको पता है ओमेगा 2 pi by t होता है, और आपको ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी होती है 1 by t. So if frequency is 1 by t, we can substitute it here, and this becomes like this, and we can write omega is equal to 2 pi if you remember. Here f is the linear frequency, omega is the angular frequency, and they're related with each other with this expression. तो अगर आपके पास साइनोसाइडल में हम देखेंगे कि क्योंकि साइन बन जाता है, we'll see this, तो आपको ये नजर आएगा as sin of omega t, so you can write it like this, sin of 2 pi over t into t. ये t इस कैपिटल T से कैंसिल नहीं हो सकता, स्टूडेंट्स उसको कैंसिल कर देते हैं, ऐसा होता नहीं है क्योंकि कैपिटल T फिक्स्ड है, ये t वेरिएबल है. ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? आपको ये बात पता होनी चाहिए that you know the main equation, which is a is equal to minus omega square x. ठीक है, इसको थोड़ा मैथमेटिकली आप इंटीग्रेट वगैरह करें तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है, आपको रिक्वायर्ड नहीं है वो उसको इंटीग्रेट करना और ये वो, बट द रिजल्ट आपके पास आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. If you look closely, this is the equation of velocity and displacement, and ये given होगी आपको in the form of plus minus omega under root x naught square minus x square. ये आपको given होगी, they will give you, right? इसमें जो v है, that is the linear velocity, this omega is the angular frequency. ये जो आपको x naught नजर आ रहा है ये constant है और ये amplitude है, ठीक है? This is the amplitude. And this x is, this x naught is constant, this is the amplitude, ये change नहीं हो रहा, x naught change नहीं हो रहा, x change होगा, and this is displacement. मैंने आपको बताया था कि velocity सेंटर पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम एंड पे जीरो होती है, तो ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, तो ये आपके पास जीरो है. और अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो at extreme position I can write here v square omega square x naught square minus x square. At equilibrium x is equal to 0, so this becomes v square is equal to omega square x naught square minus 0, right, like this, and this becomes v square is equal to omega square x naught square, which is v is equal to plus minus omega x naught. तो जब x 0 होगा यहाँ पे तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी आपके पास, which is omega x naught मीटर पर सेकेंड. जब सेंटर पे होगा तो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और जब आपके पास यहाँ पे होगा एक्सट्रीम एंड पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, बिकॉज यू हैव v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर minus x square here. So if x is equal to x naught, can I write here v square is equal to omega square minus x की जगह x naught square कर सकता हूँ. If this is true, this becomes 0, so v is equal to 0 at extreme positions. x को मैंने x naught put कर दिया क्योंकि मैं x को x naught put कर सकता हूँ, ये वेरिएबल है. मैंने बताया कि यहाँ पे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था और ये मिडिल पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन. Draw the graph of velocity against, ये हमेशा क्वेश्चन आता है और ये बड़ा फेमस ग्राफ है. अगर आप थोड़ा गौर करें, आपने एक्सट्रीम पोजीशंस पे देखना है क्या हो रहा है. आपने देखना है जब v 0 है तब क्या हो रहा है, और जब x 0 है तब इंटरसेप्ट पे आपने देखना है, इंटरसेप्ट्स. So when v is equal to 0, when v is equal to 0, we have the equation v square is equal to omega square x naught square minus x square, right? This is the same as this. There is no
no difference of this and this. They are both the same. So when v is 0, when v is 0, this becomes 0 is equal to omega square x naught square minus x square, and x is equal to x naught. आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो x is equal to x naught आएगा. Obviously because omega square ये जब करेंगे इसको तो ये x naught square x square के इक्वल हो जाएगा. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x is equal to x naught. इसका मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो ये प्लस माइनस एक्स नॉट आ रही है. मतलब आप जब इसको अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, जब आप दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नॉट. तो एक वैल्यू आएगी यहाँ पे एक्स नॉट और एक वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस एक्स नॉट. इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट पे जब v 0 है तो कुछ इस तरह से यू विल सी, you'll see something like this on the intercepts when the velocity is 0. Now, when on the y-axis we have x is equal to 0. On y-axis we have this x equal to 0. So we have the equation here: v square is equal to omega square x naught square minus x square, right? And by all means, you know that on the y-axis, x is 0, this is 0, right? This goes to 0. So this becomes v square is equal to omega square x naught square minus 0. And this becomes v square is equal to omega square x naught square, and v is equal to plus minus omega x naught. So I'm going to do my part here, and I'm going to write here plus omega x naught. And this is going to be what? Minus omega x naught. It's going to be an ellipse, oval shaped A. So the graph is going to look like this. It's going to be like this lucky shape. Draw the graph of acceleration against displacement. So what sort of graph can you expect here? A is equal to minus omega square x is the equation. Gradient is minus omega square. It's going to be a straight line with a negative gradient. A is equal to minus omega square x. आपको वो एक क्वेश्चन देगा. For example, A is equal to minus 2k over m times x, और वो आपसे कहेगा कि ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है और एक मास m लगा हुआ है. स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है और वो आपसे कहेगा कि find the value of the frequency in terms of m and k. What you do is, so basically ये देखिए ये चीज जो है वो है ओमेगा स्क्वायर. ये चीज जो आपको नजर आ रही है अली, this is omega square. So omega square is equal to 2k over m. ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 pi f. मैंने उसको ओमेगा की जगह 2 pi f पुट कर दिया. a को मैंने a के साथ कंपेयर किया, x को मैंने x के साथ कंपेयर किया, माइनस माइनस के साथ कंपेयर हुआ, ओमेगा स्क्वायर 2k over m के साथ, right? So this is what we have done here, right? So this is 4 pi square f square is equal to 2k over m. आगे हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लेंगे. ये 2 इससे कट जाएगा, 2 आ जाएगा, f स्क्वायर को आप सब्जेक्ट बना लें. दिस इज k 2 pi square m and you take the under root. So f is equal to under root k 2 pi square m. This is how you will find the frequency. अब k और m की वैल्यूज अगर आप पुट कर दें इसके अंदर तो आपकी क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. Okay, we are going to
discuss now the relationship between displacement and time. आपके पास v is plus minus omega x naught square minus x square. After doing some mathematical manipulation, we are going to arrive at this equation. X is equal to x naught sine of omega t plus phi. ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन बनता है. अच्छा, अगर फेज एंगल जीरो है, this is the phase angle. If the phase angle is zero, if zero, we get what we get. इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए. ये बनती है x is equal to x naught sin of omega t. अगर फेज एंगल जीरो है तो ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए. ये आपके सिलेबस में. This is the equation of displacement and time. फेज एंगल मतलब ये कि फेज एंगल 90 है, cosine 90 minus theta is equal to sin theta. Sin 90 minus theta is equal to cos of theta, and cos of 90 minus theta is equal to sin of theta. तो ये फेज एंगल का मतलब अगर आपके पास 90 डिग्री का फेज है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास साइन का ग्राफ है. साइन का ग्राफ ऐसा होगा, कोसाइन का ग्राफ ऐसा होगा. फेज एंगल देखिए 90 का फेज एंगल. तो ये दोनों आपको इक्वेशन नजर आएंगी, या ये नजर आएगी, या आपको दोनों इक्वेशंस आएंगी. x is equal to x naught cosine of omega t. This is the graph of sine and this is the graph of cosine. तो आपको इस तरह से कुछ चीजें नजर आएंगी, और इसमें आपके पास देखिए एंगल्स अगर आप देखें तो ये 0 है, ये 90 है, या पाई बाय 2 आपको नजर आएगा, ये 180 है. ये आपके पास रेडियन में होता तो ये पाई बाय 2 था और ये पाई था. वो सवाल आज तक पूछ रहा है रेडियंस में भी. तो आपको आइडिया होगी 270 डिग्री है, ये आपके पास 360 डिग्री है. ये भी आपके पास 0 है, 90 है, 180, 270 and 360. And sometimes they'll also ask you for, since we are dealing with this one, this is x and this is t. ये कोसाइन का नहीं है, साइन का ग्राफ है. तो ये 0, ये पाई बाय 2, this is pi, this is what, 3 pi by 2, and this is 2 pi. अगर आपके पास इक्वेशन है v is equal to x is equal to x naught sin omega t, और आप उसका ग्रेडियंट है. ग्रेडियंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का विद टाइम वेलोसिटी. तो आपके पास वेलोसिटी का ग्राफ आता है और वो कुछ इस तरह से बनेगा. आप लोगों को सबको पता है कि इक्वेशन है x is equal to डिस्प्लेसमेंट p x naught sin omega t. You know this very well. You know this, that this equation is x is equal to x naught sin omega t. If we take its gradient, the gradient of displacement time graph gives you the velocity. So if we look closely, we have the graph of this one, the graph of displacement time like this. This is displacement and this is time. अगर मैं इसका gradient लूं हर पॉइंट पे, तो मेरे पास वेलोसिटी नहीं आएगी. इसका ग्रेडियंट पहले पॉजिटिव है, फिर कम हो रहा है, फिर जीरो हो गया. तो ये कुछ इस तरह से, फिर ग्रेडियंट नेगेटिव हो गया है और नेगेटिव हो गया है. इस तरह से मैक्सिमम नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद लेस नेगेटिव होगा और लेस नेगेटिव होगा, जीरो हो जाएगा. तो ये कुछ इस तरह का कोसाइन का ग्राफ बना. दिस इज वेलोसिटी and this is time. So we are comparing this result with this one. We are comparing this result with this one. And v is equal to v naught cosine of omega t. ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए. कोसाइन और साइन में 90 डिग्री का फेज एंगल है, सबको पता है. तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, v is equal to v naught sine of omega t.
ये भी हो सकता है with phase angle. With phase angle, this becomes angle of 90 degrees. This can also be written like this.